Good morning, my dear children. It's me, Shailaja, your Hindi ma'am. Today, I will teach you an interesting story. This name of the lesson, Tilluka Butta. What is it? Tilluka Butta. Let me explain the word Butta. It's a new word for you, but you have seen it. Its outer part is green in color. When you peel the skin, you find like a yellow pearls arranged in a beautiful way. So, this is called Butta. I am sure all of you have eaten popcorn. Popcorn is prepared from this corn. This story has 4 characters. One mother squirrel and her three children. The Hindi word of the squirrel is Gilhari. What is Gilhari? Gilhari means squirrel. Have you seen squirrels? I know you all have seen squirrel. Is it very beautiful? Yes, they are very nice to see. Usually we can see squirrels on the branch of trees jumping here and there. This is the picture of squirrels. This is the picture of squirrel. Now we will start the lesson. Children, please open your textbook. Page number 8. Tilluka Butta. Page number 8. Keep your finger on the line and follow me when I read. एक गिलहरी थी. There was a squirrel. उसके 3 बच्चे थे. He had 3 children. He had 3 children. बच्चे means children. He had 3 children. उसके 3 बच्चे थे. गुल्लू, बुल्लू और टिल्लू. What was their name? गुल्लू, बुल्लू और टिल्लू. तीनों मिलजुल कर रहते थे. मिलजुल कर means together. तीनों मिलजुल कर रहते थे means lived. रहते थे means lived. तीनों मिलजुल कर रहते थे. All 3 lived together. एक गिलहरी थी. उसके 3 बच्चे थे. गुल्लू, बुल्लू और टिल्लू. तीनों मिलजुल कर रहते थे. ओके देन नेक्स्ट पैराग्राफ. एक दिन गिलहरी ने कहा, तुम बड़े हो गए हो, अपना काम खुद करो. एक दिन गिलहरी ने कहा. कहा मीन्स said. कहा मीन्स said. एक दिन गिलहरी ने कहा. One day squirrel said, तुम बड़े हो गए हो. You have grown up. अपना काम खुद करो. काम means work. खुद means self. अपना काम खुद करो. You have to do your work yourself. वो उन्हें भुट्टे के खेत में ले गई. वह उन्हें भुट्टे के खेत means field. वह उन्हें भुट्टे के खेत में ले गई. It took their children to cornfield. तीनों को एक एक भुट्टा देकर बोली.
तीनों को एक एक भुट्टा देकर बोली. देकर means gave. तीनों को एक एक भुट्टा देकर बोली. It gave 3 cones to each children and said, इसे चीलो, please peel it. बुनो, please roast it. और खालो. खालो means have it. Chil means peel. बुनो, बुनो means roast. और खालो. खालो means have it या eat it. इतना कहकर गिलहरी स्वयं अपने क्वार्टर में जाकर बैठ गई. इतना कहकर, इतना मीन्स दिस मच. इतना कहकर गिलहरी, कहकर मीन्स सेइंग. कहकर गिलहरी स्वयं अपने क्वार्टर में, क्वार्टर मीन्स हॉल, क्वार्टर में जाकर, जाकर मीन्स वेंट. बैठ गई, बैठ गई मीन्स सट डाउन. इतना कहकर गिलहरी स्वयं अपने क्वार्टर में जाकर बैठ गई. After saying, squirrel went home and sat down. Children, once more. एक दिन गिलहरी ने कहा, तुम बड़े हो गए हो, अपना काम खुद करो. वो उन्हें भुट्टे के खेत में ले गई. तीनों को एक एक भुट्टा देकर बोली, इसे चीलो, बुनो और खालो. इतना कहकर गिलहरी स्वयं अपने क्वार्टर में जाकर बैठ गई. Have you seen cooked corn? These are cooked corn. As a homework, you should read the lesson very well, write and learn the word meaning. Let's meet in the next class. Then bye bye.